बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में विजडम इंटरनेशनल स्कूल का सालाना एग्जीबिशन द विज इनोवेस्टा 2025 का शानदार इनेकाद। विजडम के स्टूडेंट्स ने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करते हुए हर एक को हैरत में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, इन स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए, मॉडल्स के जरिए, अपने एक्सप्लेनेशन के जरिए हर एक को हैरत में डाल दिया। इस नुमाइश को देखने वालों ने बस यही कहा कि विजडम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स अपने वक्त से आगे हैं। जी हाँ, स्टूडेंट्स के इस परफॉर्मेंस को देखकर देखने वालों ने यही कहा कि ये बच्चे अपने वक्त से आगे हैं। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें। बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जी हाँ, बच्चे हमारे दौर के चालाक हो गए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तरबियत और रहनुमाई के बाद इन बच्चों ने साइंस, टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, तकरीबन हर सब्जेक्ट में अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का मुजाहिरा किया और बड़े दिलचस्प और दिलकश अंदाज में अपने मॉडल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को अवाम के सामने पेश किया। दोस्तों, विजडम इंटरनेशनल स्कूल की ये कोशिश है कि ये तमाम बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ऑफिसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स बने। लेकिन इन बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ दीन भी शामिल हो, अखलाक भी शामिल हो, मॉरल एजुकेशन भी शामिल हो। लिहाजा विजडम स्कूल की इसी फिक्र और कोशिश की झलक इस नुमाइश में देखने को मिली। एक जानिब बच्चों ने साइंस और टेक्नोलॉजी के तकरीबन हर सब्जेक्ट पर, दुनिया के तकरीबन हर सब्जेक्ट पर अपने इल्म का मुजाहिरा किया, अपने नॉलेज का मुजाहिरा किया, तो दूसरी तरफ इन बच्चों ने इस्लाम की तारीख, इस्लाम की तहजीब पर, इस्लाम के पयाम अमन व इंसाफ, इंसानियत को अपने मॉडल्स के ज़रिए, अपने प्रोजेक्ट्स के ज़रिए पेश किया। साथ ही वतन अजीज़ हिंदुस्तान की अज़मत को भी बयान किया। अपने दीन से मोहब्बत, अपने मुल्क से मोहब्बत के साथ नई नस्ल दुनिया की बुलंदियों को छुए, आला से आला ओहदों पर फायज रहे और मुस्तकबिल के लीडर्स बनकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दें। इसी मकसद और कोशिश के तहत विजडम इंटरनेशनल स्कूल फ्रेजर टाउन में मौजूद अपने मुख्तलिफ ब्रांचों में द विज इनोवेस्टा 2025 एग्जीबिशन का इनाकाद किया। तो दोस्तों, चलिए रुख करते हैं इस नुमाइश का, इस एग्जीबिशन का, और जानते हैं विजडम इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स ने अवाम के सामने किस तरह अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को और अपनी खूबियों को पेश किया है। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Afia Zahra Awais and this is a Lego model of Jeddah Tower. It has 4,692 pieces and it's taken about 10 hours and over 18 people to make it. It's inspired by the desert flower because of its curved shape, and by 2028 it may even be the tallest building in the world. Jazakallahu khair. My name is Fatima Zahra. पालक की भाजी ले लो, मेथी की भाजी ले लो, चुड़ी की भाजी ले लो, कोथिमीर ले लो, पुदीना ले लो। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज साजिया सोबी। बैगन ले लो, गोभी ले लो, बैगन ले लो, गोभी ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज यूसैया कौकब। सच्चाई और दयानतदारी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Faiza Banu.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اندر ڈالا تو انگلیوں کو گیلا پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اناج والے یہ گیلا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از رمیسہ. تھوڑے دکاندار دودھ میں پانی ملا کر دیتے ہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے. پپایا چیز اور کالی مرچی ملا کر دیتے ہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از زہرا فاطمہ. تجارت اور معاملات میں دھوکہ دینا سخت منع ہے. حدیث پاک میں ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. دھوکہ گناہ کبیرہ ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ذکرا ناز. بسکٹس اینڈ چاکلیٹس کھانے سے انفلیمیشن جسم میں انفلیمیشن بڑھ کر جوڑوں کا درد، میٹابولزم اور امیونٹی کم کر سکتی ہے. آپ نے تو جنک فوڈ کا سن لیا. ہیلدی فوڈ کے بے شمار فائدے ہیں. ہیلدی فوڈ کھانے سے انسان چست اور ایکٹیو رہے گا. ہیلدی فوڈ کھانے کے دینی فائدے: نماز میں دل لگے گا، ذکر میں لذت ملے گی اور قرآن پاک تلاوت اور دینی عمل میں ترقی کرے گا. اس لیے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. مائی نیم از حاجرہ ہنا. فروزن فروٹس اینڈ جیلیز کھانے سے کینسر کا خطرہ، وزن بڑھنا، جگر اور گردوں پر دباؤ آنا. مائی نیم از امت العلیم. سافٹ جوس اینڈ ساکسز اینڈ کیچپ. بچوں کی صحت پر اثر: ہائپر ایکٹیویٹی، اٹینشن کم ہونا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. مائی نیم از مدیحہ صدف. ان پیکیج اسنیکس کھانے سے آپ کو الرجی، بریتھنگ پرابلم، اسکن ریشز، ایچنگ ہونے کا خطرہ ہے. مائی نیم از امراض. میدا اور ہاضمے کی مسائل: پیٹ میں گیس، بد ہاضمی، جلن، قبض. آنتوں کے فائدہ مند اور صحت مند بیکٹیریا کم ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیم سلیمہ فردوس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے ناپتول میں انصاف کے بارے میں فرمایا ہے جب تم ناپو تو پورا ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو. حدیث پاک کا مفہوم ہے. حاکم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کے پاس اختیار ہے جب تک کہ وہ الگ نہ ہو. اور دعا فار فائنینشیل ہارڈشپ: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. او اللہ, suffice me with what you have allowed instead of what you have forbidden, and make me independent of and make others besides me. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدین کا بازار ہے. یہاں لوگ ناپتول میں کمی کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. یہاں لوگ حق حسب کر لیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا. سورہ اعراف آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ناپتول میں کمی نہ کرو. مدین کے لوگ ناپتول میں کمی کرتے تھے. دھوکہ دہی، فراڈ اور حرام کی کمائی عام تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایمانداری کا، عدل اور حلال تجارت کا درس دیا. وہ فرمایا کرتے تھے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور کھڑا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام: تجارت میں دیانت داری. وہ فرمایا کرتے تھے انی اخاف بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. ترجمہ: میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں گھیر لینے والا عذاب نہ آ جائے. لیکن قوم نے نبی کی بات نہ مانی اور اللہ کا عذاب نازل ہوا. ایک شدید زلزلہ اور شگار نے انہیں ہلاک کر دیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
According to science, the changes between day and night is caused by the rotation of the Earth on its axis. If the Earth did not rotate as it does, the day-night cycle would be very difficult or possibly even non-existent. The changing length of days and nights depends on where you are on the Earth and the time of year. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The changing of water into water vapor from different source and again changing into liquid is called water cycle. It continuously goes on in nature. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The model illustrates solar and lunar eclipse. A solar eclipse occurs when the moon aligns between the sun and earth, blocking sunlight. A lunar eclipse happens when the earth positions itself between the sun and moon, causing shadow. The project fosters understanding of space science while promoting creativity with everyday items. Thank you. To design and construct an 8-seater giant wheel using BLIX mechanical components in order to understand rotational motion, gear mechanism, structural stability, and basic mechanical design principles. Jazakallah. Warahmatullahi wabarakatuh. My project is about the future transportation. In the future, the people will travel in new and smart ways. Technology will help everyone move faster, safer, and more easily. A futuristic building with a stadium on top, inspired by new ideas from Saudi Arabia, like drone delivery, self-driving cars, virtual mobile, and firefighting drones. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My project is about photosynthesis. The process by which plants prepare their food with the help of water, carbon dioxide, sunlight is called photosynthesis. A green colored pigment, chlorophyll, traps energy from sunlight and prepare food for the plants. Water and minerals are absorbed from the soil by the roots present in the roots. Carbon dioxide diffuses into the leaves through stomata. Thus, plants prepare their own food with the help of water, with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My project name is Smart Agriculture Farming. The core idea is to demonstrate how modern technologies can be applied to agriculture to create an efficient, protected, and data-driven farm. The project focuses on various concepts including farm security, environment control, water management, fire alarm, and seed protection. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am gonna represent the model of layers of atmosphere, layers of earth. The atmosphere is the blanket of air that surrounds the earth. It protects life by blocking harmful radiation, keeping temperature stable, allowing weather to happen. The atmosphere is divided into 5 main layers, each with different features and functions. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. The earth is made up of several layers, each with different physical and chemical properties. The 3 major layers of earth are crust, mantle, and core. The crust, mantle, and core each play an important role in shaping our planet. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to talk about sun chaser. To design and implement a sun chaser, which is also called a solar tracker using Arduino and simple electronic components that automatically tracks the sun's movement to maximize the light exposure on a solar panel. The sun chaser is a simple yet effective model for understanding renewable energy tracking systems. Fields used are solar power plants, renewable energy tracking systems, educational STEM projects, green technology research. This shows when the sun comes, the sunflower automatically turns to the sun. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Today, I am presenting a water saver tap model. Water scarcity is a growing global concern, and simple innovations can make a big impact. The water saver tap is a practical model designed to reduce water consumption without compromising daily usage. This model helps in saving water but with the use of electricity. The water saver tap model works by limiting the flow of water through aerator, a flow restrictor, and a water reservoir. This design is ideal for households and public spaces, promoting eco-friendly water use without affecting functionality. Use of such taps can lead to significant water savings, benefiting both the communities and the environment. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This project aims to help students understand the honeybee structure and purpose through a tech-based interactive honeybee model. Honeybee are among the most fascinating and beneficial creatures created by Allah subhanahu wa ta'ala. In the Quran, an entire chapter is named Surah An-Nahl, the bee. Assalamu alaikum. I am your little honeybee. This is my head. Allah made my tiny eyes so I can see colorful flowers. I also use my head to sense the height. Alhamdulillah, Allah designed me and the tree. These are my antennas. They help me smell yummy flowers and track other bees. Allah gave me these to guide me on my little adventure. Alhamdulillah. These are my wings. Allah made them light and super fast. I flap them hundreds of times every second so I can visit many flowers. Flying is fun. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to talk about pollution control. We can control pollution in many ways, such as using solar panels, air purifier, water filters, etc. Air pollution can be reduced in following ways. By using solar panels can be used to generate electricity, which is used to run cars, which reduces the air pollution. By using air purifier, lots of toxic gases are let out from the factories. This causes a lot of pollution. If we use an air purifier, the smoke can be purified and then let off, which reduces the air pollution. By using water filters, wastewater can be treated by using water filters before letting the water into the river. By making some minor modification, we can reduce pollution and make our earth clean and pollution free for us and for future generations. Thank you. The project shows how simple sensors can prevent accident and also traffic at the right time. Traffic management is important to reduce accident and control movements of vehicles. Working also? Here's the working. The IR sensor detects any obstacle or vehicle coming too close. The relay activates the warning system and the LED glows. Accident prevention. The IR sensor detects any obstacle or vehicle coming too close. When a vehicle is detected, the relay activates the warning system, the red LED glows, and the buzzer makes a sound. This gives an early warning, helping avoid collisions. Thank you. The process of converting non-recyclable waste into usable energy or heat through technologies like gasification, insulation, and anaerobic digestion. This also provides an alternate energy source. Thank you. Hello everybody, I love to say you about my model. My model is on earthquake resistant buildings. Earthquake resistant buildings are structured, engineered to withstand seismic forces, minimizing damages, preventing collapse and also protecting lives. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My model is about museum alarm system. To design and implement a museum alarm system using Arduino Uno that directs unauthorized access to artifacts and triggers an alarm to prevent theft or damage. Here is how it works. If someone tries to rob the diamond inside, it gives alarm to the security. The museum alarm system using Arduino provides an effective and low-cost security solution. Thank you. A wastewater treatment plant is a facility that cleans used water and removes harmful impurities. It treats domestic and industrial wastewater through physical, chemical, and biological processes. They also safeguard public health by preventing the spread of waterborne diseases such as cholera, malaria, and typhoid. Thank you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Railway stations have multiple platforms where passengers often face difficulty moving from one platform to another. Crossing railway tracks is dangerous and unsafe. A railway platform connector provides a secure and convenient solution. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This model shows that sometimes waste can be useful. A biogas is a clean fuel made from kitchen waste, plant waste, and animal dung. It forms when waste breakdowns without oxygen inside a closed tank. The methane in the gas burns easily and gives useful energy. It also reduces pollution by turning waste into something helpful. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A thermal power plant is a facility that generates electricity by using heat energy. The heat is commonly produced by burning fossil fuels such as coal, oil, or natural gas. The heat is used to convert water into high pressure steam inside the boiler. The steam then flows to a turbine, causing it to rotate at high speed. The rotating turbine is connected to the generator to produce electrical energy. They are widely used around the world due to their ability to produce large amount of power. These plants can run continuously and supply electricity to industries and households. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My model is about blood circulatory system. A heart is a muscular organ about the size of a fist. It pumps blood to all the body parts and is located between the lungs, little tilted towards the left side. A normal human heart beats 32 beats per minute. Heart has 4 chambers, deoxygenated impure blood from all the body parts first enters the heart through superior and inferior vena cava to right atrium and right ventricle. Then the blood from the heart goes to the lungs through pulmonary artery. It becomes oxygenated, pure in the lungs and enters the heart through pulmonary vein, through left atrium and left ventricle. Then the blood from the heart goes to all the body parts through aorta. This process continues for each heartbeat. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My model is about digestive system. The digestive system is a group of organs in the body responsible for breaking down the food we eat into nutrients that can be absorbed and used for energy, growth and repair. It begins at the mouth, where food is chewed and mixed with saliva. The food then travels down the esophagus to the stomach, where it is churned and mixed with digestive juices. The partly digested food moves into the small intestine, where most of the digestion and nutrients absorption take place with the help of enzymes from the pancreas and bile from the liver. The remaining waste enters the large intestine, where water is absorbed, and finally the waste is expelled through rectum and anus. The digestive system works continuously to supply the body with the nutrients. Thank you. Here's my model about disaster management. Disaster management is the process of preparing for, responding to, and recovering from emergencies. It helps protect people and property from natural disasters like floods, earthquakes, and man-made ones like train accidents and fires. Floods require early warnings, quick evacuation, and safe shelters. We use water level sensors to detect rising waters and give early warnings. Earthquake safety uses vibration sensors, strong building designs, and emergency drills. Train accidents can be reduced through track sensors, signal system, and trained railway staff. Fire safety uses smoke detectors, fire extinguisher, fire alarm, and emergency drill. Community awareness programs help people understand what to do before and during disasters. Technology, teamwork, and good planning together reduce risk and save lives. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Qutub Minar. The Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak, completed by Iltutmish, and later repaired with a fifth floor by Firdoz Shah Tughlaq. The Qutub Minar is located in Mehrauli, South Delhi, India. This is an UNESCO World Heritage Site that symbolizes the beginning of Indo-Islamic rule in India. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the model of Buland Darwaza. It is built by Mughal Emperor Akbar and it is located in Fatehpur Sikri, Agra. Thank you.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Taj Mahal. Taj Mahal is one of the most famous monument in the world. It is located in Agra, Uttar Pradesh, in the banks of Yamuna River. Thank you. This is the model of Jama Masjid. Jama Masjid was built by Shah Jahan. Jama Masjid is located in the heart of Old Delhi. Jama Masjid symbolizes Islamic and Indian cultural fusion. Thank you. Assalamu alaikum. This is a geothermal power plant that uses fuel to generate electricity with the help of coal, gas, oil, or biomass. This helps to provide electricity worldwide. Thank you. Assalamu alaikum. This is a microscope. It helps us observe things like plant cell, microorganisms, bacteria, and many more. Because of this instrument, scientists have discovered medicines, understood diseases, and learned how living things function. To conclude, it is not just an instrument but a gateway to the hidden world that exists all around us. It has contributed immensely to the field of medicine and science. Thank you. Assalamu alaikum. This is a rotating model of DNA double helix structure representing deoxyribonucleic acid, the molecule carrying genetic instructions for life. The model demonstrates the twisted ladder-like structure of DNA. Thank you. Assalamu alaikum. This model is based on smoke detector. This model demonstrates real-time sensing motor, autonomous navigation principles, making it ideal for robotic. Whenever the smoke is produced, the sensor senses the smoke and make a buzzing sound. Nowadays we see digital displays on buses and even bus stops, railway station, etc. This is a project of Message Maki. Message Maki using an Arduino works effectively as a digital display system. It demonstrates text display control, interfacing of display modules, and real-time messages. Presentation using a microcontroller. Applications these are applied in railway stations and bus stops, schools and colleges as announcements, hospitals and public information areas, digital display systems, event management, and IoT displays. Thank you so much. Assalamu alaikum. This is a telescope. A telescope is a powerful optical instrument which uses lens or mirrors to collect and focus light on far objects or using electromagnetic radiations, making them appear bigger and brighter for observation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This project is about radar system. Radar is a device which is used in various fields. Here we have an army base where the radar is used to detect the presence of the enemy. The components which are used are ultrasonic sensor, servomotor control, buzzer, connecting wires, Arduino Uno, and breadboard. Conclusion: the radar system using Arduino Uno works more efficiently for short-range object detection and scanning. This project demonstrates the concept of ultrasonic sensor, servomotor control, and basic radar principles, making it an excellent learning project in embedded system and robotics. Application: object detection and proximity sensing, robotic navigation, and obstacles mapping, security and surveillance system. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is an RFID tag and a reader system using Arduino operates efficiently as a contactless identification. This is the card called as RFID, radio frequency identification, and it is used in colleges, offices, hotels, etc. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syed Abdurrahim from Red Force. I am representing my model today about solar panel boat. A solar panel boat is a vessel powered by electricity generated from sunlight, which is converted by solar panels into energy for propulsion and OV boat system. Solar boat can generate their own power, reducing reliance on solar power. Solar panel mounted on the boat. This captures sunlight and convert into direct current DC electricity. The electricity from the panels is stored in a battery bank similar to the system in electric cars. This stored energy can be used when the sun shines, such as at night on cloudy day. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Shah. I am from grade 4. Our model is solar system. The sun and its celestial bodies, which are in close relation to each other, make a solar family, which is known as solar system. These bodies, which are moving around the sun in fixed orbits, are known as planets.
These planets are held by the Sun by its gravitational force. These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Daudaras. I am from grade 4. Our model is clap switch. To design and implement a clap switch using Arduino that turns an electrical load LED relay on or off using sound clap or as the control signal. It demonstrates the effective of touch-free light control, and microcontrollers and digital output control. Let me show. When you clap, once the lights will on. When you clap, the lights will off. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Saimayan. Our model is free energy using water wheel. The model uses a water wheel. The model uses a water wheel to convert the kinetic energy of flowing water into mechanical energy. The system transforms the water potential energy into kinetic energy, which is then converted into mechanical energy by the wheel and electrical energy by the generator. Thank you. Model is about climate change. This project shows between a healthy good climate and the bad one. This is a visual representation comparing the impact of good climate and the bad climate on environment. This we need to protect our environment by using clean energy, planting trees, reducing pollution to ensure a healthy planet for future. Assalamu alaikum to everyone. I am Abdul Qasim Al Zahri. I was a pioneering Arab Muslim physician and surgeon. I have invented more than 200 surgical new instruments. Kamish from Al-Andalus celebrated as the father of operative surgery for my innovation. Assalamu alaikum. I am APJ Abdul Kalam. I was a leader of Indian independence movement. I was the first Minister of Education in independent India. My birth anniversary is celebrated as National Education Day in India. I was awarded Bharat Ratna in 1992. Assalamu alaikum everyone. I am Tipu Sultan. I am the ruler of Mysore. I was a skilled military leader and innovator known for use of rockets in warfare against the British. I am popularly called the Tiger of Mysore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shalim Manas Qureshi. I am studying in 4th standard B section. I am Dr. Israr Ahmad. I was the Islamic scholar, theologian, philosopher. I was the one-to from Tanzim-e-Islam. I was also graduated in MBBS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Ibrahim Ali Abu Bakr Siddiq. I was an Indian agricultural scientist. My research is to genetic and plant by breathing. By seeing my significant work, the government of India honored me with Padma Shri Award in 2011. Assalamu alaikum. I am Dr. Salim Ali. My full name is Salim Muizzuddin Abdul Ali. I was an Indian ornithologist and naturalist. I was also referred as the first birdman of India to conduct systematic surveys across India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Furqan Shoaib. I was the innovator behind Asia's first hybrid flying car. I am the Chief Technology Officer of Sonata Aeromobility and Indian inventor. I had a specialization in aerospace design and UAV engineering. Thank you. पहला अज़ाब तूफान का था। यह 7 दिन तक रहा। इसमें सिर्फ फिरौनियों और खिब्तियों बनी इसराइल भी साथ रहते थे। मगर इस तूफान का असर बनी इसराइल पर नहीं होता था। 7 दिन बाद फिरौन के लोगों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और ईमान लाने का वादा करके अजाब को दूर करने की दुआ कराई।
तूफान ख़त्म होने के बाद मिस्र में ऐसे सरसब्ज़ व शादाबी आए कि उससे पहले कभी नहीं आए थे। ऐसे सरसब्ज़ व शादाबी आए कि उससे पहले कभी नहीं आए थे। खेती बागात गल्ला बेहतरीन उगने लगे। ये देखकर खिब्तियों ने कहा, ये तूफान तो हमारे लिए बेहतर साबित हुआ, और ज़्यादा जुल्म बनी इसराइल पर करने लगे। एक माह के बाद फिर से टिड्डियों का अजाब आया। ये भी सिर्फ फिरौनियों और खिब्तियों के घर, खेत और बागात में अजाब बनकर आया। खाने पीने सोने की चीजों में हर जगह टिड्डी ही टिड्डी थे। बनी इसराइल के घर, खेत और बागात महफूज थे। ये देखकर फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अजाब को टाल देने की दुआ कराई और अजाब खत्म हुआ। फिर से फिरौन के लोगों ने अपने वादे से पलट गए और जुल्म व सितम करने लगे। फिर एक महीने के बाद कुमल का अजाब आया। यह भी एक किस्म का कीड़ा था जो फिरौनियों के बाल, खाल और चेहरे भी खा जाता था। हर अजाब पहले वाले अजाब से सख्त होता था। 7 दिन बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अजाब को दूर करने की दुआ कराई। फिर 1 महीने के बाद मेंढक का अजाब आया। ये भी 7 दिन तक चलता रहा। खाने पीने की चीजों में हर जगह मेंढक ही मेंढक थे। ये इतनी सख्त आजमाइश थी कि रोटी खाने के लिए मुंह में लेते तो रोटी मेंढक बन जाता। भूख से परेशान होकर बनी इसराइल के मुंह से रोटी चबाकर खुद मुंह में लेते तो फिर रोटी मेंढक बन जाता। इस अजाब से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर अजाब को दूर करने की दुआ कराई। फिर 1 महीने के बाद खून का अजाब आया। यह भी 7 दिन तक चलता रहा। जब फिरौन के लोग पानी पीते तो वो खून में बदल जाता। इस अजाब से तंग आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर ईमान का वादा करके अजाब को दूर करने की दुआ कराई। फिर वो अपने वादे से पलट गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनको पानी में डुबाकर हिलाक कर दिया। जब अल्लाह ताला ने फिरौन को तूफान में उसकी और उसकी कौम को हिलाक कर दिया तो सिर्फ फिरौन की लाश को बाकी रहा, क्योंकि आने वाली उम्मतों को इससे इबरत हासिल हो सके। कौम समूद पर जब अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, तब वहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि अल्लाह पर ईमान लाओ। उन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया और उन्होंने मांग की कि इस पहाड़ से ऊँटनी को निकालो। जब सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और इस पहाड़ से ऊँटनी निकाली, उन्होंने अपने बात से पलट गए और अल्लाह पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि ये ऊँटनी को कुछ मत करना वरना अजाब आ जाएगा। तो ये लोगों ने कुछ दिन ऊँटनी को देखा और कुछ दिन के बाद इनके पैर काट दिए तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा। एक खौफनाक आवाज़ आई और सारे लोग हलाक हो गए। Assalamu alaikum sir, it's a working model on robotics. It's a Bluetooth controllable robot controlled by the app called Plodge. It can do various activities like it can say hi to you. It can salute to you. It can do more activities like it can do push-ups for you sir. It's made up of total 36 servo motors and block-based coding is done. It's important for students who are interested in robotics engineering. It's very helpful for them. It can motivate you in your activities like if you want to do workout, dancing. It's the best option. Thank you sir. It is an atmospheric water generator. Yes. Assalamu alaikum. There is an atmospheric water generator. It is a device that extracts drinking water from humid air. It works under the principle of condensation, just like how dew forms when humid air touches our cold surface. This project aims to create a mini atmospheric water generator using simple and low-cost components. This mini AWG is a compact solution for generating potable water using humid air. While limited by output capacities and humidity levels, it can be valuable in regions with water scarcity or for emergency.
Assalamu alaikum. This is a working model of science which produces electricity from the ground. First, we take water from the ground and this converts steam in, and this generates electricity for the whole residential area. And it produces large number of electricity, and it will not cause pollution, and it is renewable. And it gives large amount of electricity for factories, street lights, buildings, industries, etc. etc. Thank you, sir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The blind man stick using Arduino is effective and assistive technology solution for visually impaired people. Whenever the objects come in the front of the stick, it will detect. Example, when a blind man is walking on the road, it will sense the object, it will come in the front, and he will be safe from the accidents. It will be safe from the accidents. Thank you. Basically, an earthquake is a natural disaster caused by the movement within the Earth's crust that can lead to serious damage or loss of life. So we have invented a new model that detects the tectonic plates and send the signal through sound to the people that the earthquake is going to occur, so that we could stay calm and take safety measures. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our project. It's a working model of a light following robot. The light following robot uses light frequency and follows it, and this project creates a foundation between basic this project light industry. This project make sensor. This project mainly demonstrates sensor interfacing, decision making logic, and motor control. Creates a strong foundation between basic robotics and automation. Thank you. Sir, this is a project of Sit and Mark. There is a pressure sensor mounted in the wall of the classroom. When the student enters in the classroom, he should put a pressure or touch this. The LCD screen will trigger a message that the student is present, and it looks like a smart classroom. Assalamu alaikum. My name is Jay Mohammed Zayan. Chandrayaan is a series of lunar mission of Indian Space Research Organization (ISRO) to explore the moon. Chandrayaan 3 successfully landed a rover on the moon's south pole. The primary objective of Chandrayaan 3 is a direct follow-up to the partial success of Chandrayaan 2, focusing on the reliability and the technological enhancement. The Pragyan rover was deployed from the Vikram lander to traverse the lunar terrain. Thank you. Assalamu alaikum. Today we explore drones or unmanned aerial vehicles, UAVs. These versatile flying robots are controlled remotely or fly autonomously. Initially developed for military use, drones are now transforming various fields from photography to delivery, surveillance, search and rescue. A drone is essentially a flying platform with multiple rotors like mini propellers that generate lift and thrust. Assalamu alaikum. This is a smart scarecrow. A smart scarecrow is an upgraded version of a traditional scarecrow used in farms to protect crops. Instead of just standing in the field, it uses technology and automatically detects and scare away birds and animals. This project combines sensors such as ultrasonic motion sensor, PIR motion sensor, or cameras. Camera helps to detect the movement. Once the movement is detected, microcontroller activate output devices such as rotating arms, buzzers, speakers, etc. And recorded sounds to scare away birds and animals. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a working model called driver safety enhancement system. I mean, it can avoid accidents. This is a car representing a real vehicle, and this is an eye blink sensor so that it detects the driver's eye activity. We have used an Arduino Uno, relay kit, DC motor, and 9 volts battery to continuously observe the driver's alertness. We have uploaded a code in the Arduino so that it controls the whole system. So when the driver is driving the car, he may lose attention and become drowsy. So when he sits for more than 2 seconds, the car stops moving and the buzzer starts buzzing. So when he wakes up after 5 seconds, the car stops moving and the buzzer stops buzzing. Thank you. My name is Mohammed Yusuf. Welcome to Goa. I am from Goa. Sir. My name is Farwan Nakir. My name is Zahra. Welcome to Karnataka State. Swagata inu nanna desha Bharata ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
माय नेम इज शीमा. वेलकम टू हरियाणा. हरियाणा की मिट्टी और यहाँ के लोग दोनों एक जैसे सच्चे हैं और यही बात सबसे अलग है. गुड. हैदराबाद एक तारीखी शहर है जो अपनी तख्ती, उर्दू ज़बान और सकाफत के लिए मशहूर है. अस्सलामु अलैकुम. वेलकम टू कोलकाता कैमेनोचो. My name is Sarfa. Welcome to Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is a mountainous state situated in the house. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम सैयदा लिज़ा बतूल है. मैं 3rd A सेक्शन से हूँ. ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं. बाबुसलाह. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नफिल नमाजें भी पढ़ते हैं. बाबुर रयान. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो रोज़ा रखते हैं. बाबुल ईमान. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अपने ईमान पर साबित कदम रहते हैं. बाबुल जिहाद. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं. बाबुल सदका. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो सदका और खैरात करते हैं. बाबुल ज़िक्र. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह में जिक्र करते हैं. बाबुल काज़मीन अल-गैज़. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अपना गुस्सा पीते हैं और अल्लाह की राह में लोगों को माफ़ करते हैं. बाबुल हज. ये दरवाज़ा उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की राह में हज करते हैं. ये जन्नत के 4 नहरें हैं. शहद, दूध, शराब बगैर नशे के, पानी की नहर. जज़ाकल्लाह. हमारे जिस्म में 206 हड्डियां हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. हड्डियों का आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई से जोड़ कहलाता है. साइंस हमें बताती है कि हमारे जिस्म में 360 जोड़े. वही अल्लाह के नबी आज से 1400 साल पहले फरमाया है कि सही मुस्लिम हदीस 107 बनी आदम में हर एक को 360 जोड़ से पैदा किया गया है. जज़ाकल्लाह. जो ईमान वाला गुनहगार बगैर तौबा के मरेगा, इसकी कब्र इसके लिए परेशानी और तकलीफ का मंजर होगी. इसकी कब्र इसके लिए दोज़ख का गड्ढा बनेगी. इसकी हड्डियां और फसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी. इसके बुरे अमाल बदमाश शक्ल में अफसोसनाक हालत में जाहिर होंगे. वो मुनकिर और नेकिर का सवाल का जवाब ना दे सकेगा, जिसके बाद इसको अजाब होगा. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ibrahim. I am from 1st A. I am a bank manager. I work in a bank and take care all the work there. I help people receive and withdraw their money safe. I am green my staff. Everything runs smoothly. I help customers keep their money safe. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am talk about the ATM. ATM means automated teller machine. We use an ATM to take out money from the bank using a card. It works anytime, day or night. It helps people to save time and get money easily. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hiba Sudem. I am sitting in 1st B. Dua number 1. Dua for going to school seeking knowledge. Allahumma zidni ilma. Allah increase me in knowledge. Thank you. Teacher, Assalamu alaikum. I am a school teacher. I teach students in school and I help them to read new things and I help them to read, write and be good and kind, and I always guide my students to do their best. A teacher is a light to show the right path. Thank you. Assalamu alaikum.
The best among you are those who learn the Quran and teach it. Dua for understanding. Allahumma zidni ilman wa fahman. Oh Allah, increase me in knowledge and understanding. Assalamu alaikum. I am an imam. I am a leader in mosque. I lead prayer and teach about Islam. I guide people to goodness, kindness, and mercy. Assalamualaikum. My name is Anabia Mohammadi. I am a pilot. I fly aeroplanes in the sky. I take passengers safely from one place to another place. I wear a uniform and always follow safety rules. I love my job because I help people travel around the world. I am a baker. I bake biscuit, burn cake, pastries people love to eat. I make my bakery smell is very sweet and delicious. दुआ फॉर बेकर अल्लाह मुबारक ली फिर इसके हमारे तर्जुमा ए अल्लाह मेरे काम में बरकत अता फरमा हदीस द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said no one eat better food than that which he eat out of the work of his own hands. Thank you. Doctor. Assalamualaikum. My name is Dr. Hassan. I am a doctor. I help sick people to get better. I give medicine and take care of patients. I work in a hospital and save lives. A doctor keeps people healthy and happy. Thank you. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never visit a sick person without Assalamualaikum. My name is Hafsa Imam. I am a nurse. I take care of sick people. I give them medicine and help the doctor. I work in a hospital and save life. Assalamualaikum. I am a train driver. I take the train and take passengers safely from one place to another. I am a proud to be train driver because I help people reach their destination safely. Thank you. Assalamualaikum. Myself Muhammad Isa. I am a TT traveling tickets examiner. I work in the train. I check the tickets of all the passengers. I help people travel safely and follow the rules. Thank you. Assalamualaikum. I am a rodent. I look like a plant, but I am made of tiny animals. We build rodent jeeps, house for fish. Allah teach me a teamwork through His creations. My name is Umar Habiba. I am a seashell. A little grain of sand slipped inside where the oyster keeps a hide. It turns into a shiny pearl. The ocean jewel for boys or girls. Jazakallah. Assalamualaikum. My name is Rafia Fatima. We are called pink and bright, shining softly in the light. Allah made us home so wide, where any fish love to hide. Assalamualaikum. I am a dolphin, smart and friendly. Allah gave me the gift to swim fast and help others. Truly, the Allah is the most merciful. Assalamualaikum. I am a clownfish, orange and white. I swim with joy, a happy sight. Allah made me colorful too. Every sea creature short or tall, praise Allah, the Lord of all. Assalamualaikum. I am a shrimp, tiny and shy. I swim in the ocean quick as I fly. Allah made me small and neat with little legs, tail so sweet. Assalamualaikum. I am a sea turtle. Allah gave me strong shell for protection. I travel long distance and Allah also always guides me. Alhamdulillah for His care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Pasha. I am a crab. I walk side with my skulls. Allah give me a hard shell for safety. Every part of me should
Assalamu alaikum. My name is Zahra Fatima. Hi, I am an astronaut. I explore space, chase stars, and live the cosmic dream. Assalamu alaikum. My name is Syed Hussain Ahmad. We are class 3 students. Today we will be explaining the Big Bang Theory according to science and Quranic verses that talk about the beginning of the universe. 1400 years back, Quran declared that the universe is a creation by Allah as mentioned in Surah Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. According to science, the whole universe was a tiny dot, super hot and dense, like a speck of sand. Then, about 13.8 billion years ago, it suddenly burst outward and has been expanding and cooling ever since, creating stars, planets, and everything we see today. It is who created the heavens and earth in 6 days and established himself above the throne. This initially means the heavens and earth were like a lump of matter and Allah parted as mentioned in Surah Anbiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانا قرطعا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء هيئ أفلا يؤمنون. Have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were a joint entity and we separated them and made from water every living thing? Then will they not believe? The Big Bang reminds us that the universe is vast, ancient and endlessly fascinating. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ruqayya Taneem. I am studying in class 3A section. The word moon al-Qamar is mentioned 28 times in the Quran. It is the ball of rock that revolves around the earth. It has no light of its own and it is lit up by the light of the sun. अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंसानों, जिन्नों, परिंदों, चरिंदों और दरिंदों वगैरह पर हुकूमत अता फरमाई थी और ऐसी ज़बरदस्त हुकूमत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें अता फरमाई थी और परिंदों वगैरह की ज़बानें आप बाखूबी समझ लेते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बल्किस मलिक समा की मलिका थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद परिंदे ने खबर दी कि मैंने एक औरत मलिका देखी और वो सूरज को पूछती है। आप अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा था कि तुम मुसलमान होकर यहाँ हाजिर हो, अगर मुसलमान ना हुई तो लड़ाई के लिए फ़ौज लाता हूँ। ये पैगाम सुनकर बिल्किस मुसलमान होने के इरादे से अपने शहर से चली। उनके चलने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मौजूदे से उनका एक बड़ा भारी कीमती तख़त भी अपने दरबार में मंगा लिया और ये बात दिखलानी चाहिए कि तुम्हारे खुदा की दी हुई बादशाही तुम्हारे दुनिया की बादशाही से ज़्यादा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक हौज़ पानी से भरकर इसके ऊपर कांच का फर्श बना दिया जाए और बिल्किस को यहाँ पर हाजिर होने का हुक्म दिया। तो वो समझी कि मुझे पानी में गुजरना पड़ेगा, तो पाइंचे चढ़ाने लगी तो फौरन उनको कह दिया गया कि इस पर कांच का फर्श है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा और कारीगरी को देखकर वो फौरन कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम के अजीमुल शान लश्कर चला जा रहा था। इत्तफाक से वो एक ऐसे मैदान से गुजरे जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी दूसरे चींटी से कहे अपने अपने घर में घुस जाओ, ऐसा ना हो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर हमें बेखबरी से कुचल दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये चींटी की बात सुनकर इनकी समझदारी पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े और उन्होंने अल्लाह से शुक्रिया
شکریہ ادا کیا. یا رب تو نے مجھے علم اور نعمتیں دی, میں تیرا ہمیشہ شکر گزار رہنے والا بنا. تو وہ ایک چھوٹی چیوٹی کے لیے ساری فوج رک گئی اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب کہف. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے کے بعد شریعت کے خلاف چلنے والا بادشاہ دقیانوس کی حکومت آ گئی. اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے 7 یا 8 نوجوان اپنے کتے کے ساتھ اس غار میں چھپ گئے اور سو گئے. تو اللہ نے ان کو 309 سال تک اس غار میں سلائے رکھا. 309 سال کے بعد بیدروس نام کا بادشاہ آیا جو بڑا نیک دل تھا. اس نے پھر سے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا نعرہ بلند کیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے. تو بادشاہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ ایسی بات دکھا کہ لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مائی نیم از عائشہ نسرین. تو اللہ نے ان کو جگہ دیا اور ان کو بھوک لگی تو ان میں سے ایک شخص کھانا لینے گیا. کھانا دے کر پیسے دیے تو اس دکاندار نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تم کس زمانے کا سکہ دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ ہم دقیانوس بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں کل یا پرسوں چھپ گئے اور سو گئے. پھر یہ قصہ بادشاہ تک چلا گیا. غار تک گئے, سب نے یہ منظر دیکھا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد وہ لوگ غار کے اندر چلے گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. جزاک اللہ خیر. تو کافی محنت یہاں پر بچوں نے کی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے ایک ماڈل اور پروجیکٹس پیش کیے گئے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ محنت تو بہت دن سے لگ رہی ہے, آلموسٹ 1 مہینے سے چل رہی ہے محنت. محنت سے زیادہ ایسا ہے کہ جو لوگ ادھر کر رہے ہیں ان کی عمر کے لیے بہت آگے ہیں وتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, سائنس, سب چیز جو ہے بہت آگے بڑھ کے وقت سے آگے ہیں جو ہم لوگ ہمارے ٹائم پہ نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب کہ ان لوگوں کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اور ٹیچرز ان کی محنت بہت زیادہ لگی ہے اس میں. بہت اچھا ایکسپیرئنس رہا ہے ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, نیو آئیڈیاز, نیو کانسیپٹس. تو ایک طرف سے سائنس کو لے کے اب اور آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں, جو لوگ پیرنٹس کو بھی بہت نالج مل رہی ہے. الحمدللہ اٹس گوئنگ ویری ویل. بہت غور سے آپ اس ایگزیبیشن کو دیکھ رہے ہیں. It's very good and very beautiful. The boys and the girls, whatever they explain, it's about the topic what they explain, and focusedly they are like whatever the explanation, let it be water management, traffic stuff they are, the robotics, and about that other stuffs. They are processively again over the project and explaining them so beautiful like a scientist they are. So I have been I have been like many seminars. I was in other seminars also, but this students are very bright, and because of their school teachers and their management is very good. I'm very thankful. Thank you. My name is Shoaib. I am the grandson of Ali Asghar. Yeah, thank you. تو اوورال کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ پورے اس ایگزیبیشن کو دیکھنے کے بعد؟ ایگزیبیشن کو دیکھنے کے بعد میں مجھے لگا کہ ٹرولی پرسنالٹی میٹس پوٹینشیل. بچے بہت محنت کی ہے. بچوں کی محنت کے پیچھے استادوں کا اور جو مینجمنٹ ہے یہاں کا, ان کی کتنی محنت ہے اس کے پیچھے وہ نظر آ رہی ہے. بچے دے آر کیچنگ اپ ود دی ٹائڈ ماشاء اللہ. تو زمانہ تیزی سے بدل رہا ہے اور بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ جو ہے ترقی جو دیکھنے کو مل رہی ہے, تو بچوں میں بھی جو ہے کمپیٹیٹیو اسپرٹ اور سائنٹیفک ٹیمپر بڑھانے کے لیے اس طرح کی کوششیں ضروری ہے. تو بچے ابھی یہاں پہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا دیے کہ وہ زمانے کے پیچھے نہیں ہے. حالانکہ یہ بچے سب لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیکورڈ ہیں. جبہ پیجامہ پہنے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیکورڈ ہے. ڈریس سے کسی کو ہم لوگ جج نہیں کر سکتے, ان کی ٹوپی سے ان کی داڑھی سے ہم جج نہیں کر سکتے. اب یہ بچے ثبوت کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں, حالانکہ بہت چھوٹے بچے ہیں
अब दूसरे बच्चे, अब बड़े लोगों को अगर इंटरव्यू भी देना है छोटी सी 2 मिनट की 5 मिनट की, तो रिहर्स करके आना पड़ता है कैमरा के सामने. अब ये बच्चे ऑन द स्पॉट बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग ऑन द फुट. So this is a very good thing for the society, that we can prove that we as Indian Muslims, we will take India so far, so ahead of the world that everyone will follow us. हम एडवांस में इतना आगे बढ़ जाएंगे इन बच्चों के ज़रिए से मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, कि हम लोगों को दूसरे सब लोग कौम जैसे पहले एक दौर था इस्लाम का, जैसा फॉलो करते थे इस्लाम को, इस तरह से अब इन लोगों को भी फॉलो करेंगे. Okay, they are very quite good. Gone through all the the projects, all the working projects. So they are used the Arduino and all the things. These are the things like the STEM education is very important. Why school has chosen this? So Sharif sir has gone through all the projects. He liked it. So and later on we are working on this. Students are really good. So they are doing well. So these are all the 21st century skills. So these are all the things they should know. So that's what they are doing. So using a sensors, UV or LDR sensors, or you take a Arduino. So these are all the things they are using. The blind stick which you can see sitting on the chair, and depends on the wavelength of the each students, like how the projects are working. So all good. So they are using a drones and everything. It's quite good. तो काफ़ी मालूमात आपको हासिल हुई है, बताइए. माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने इतना सब किया है, बहुत मेहनत की है, माशाल्लाह वी आर वेरी सेटिस्फाइड. तो आपके कौन से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरे 2 भाइयों के 2 लड़कियां पढ़ रहे हैं, मेरी 1 लड़की पढ़ रही है. उन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया? नहीं किया नहीं है, 10th स्टैंडर्ड है, उनको टाइम नहीं मिला एक्चुअली, ट्यूशन स्कूल की वजह से इस बार उन्होंने नहीं ये लिया. तो खुशी हुई इसमें? बहुत माशाल्लाह बहुत मेहनत की है बच्चों ने, तो बहुत अच्छा लगा. माशाल्लाह बहुत अच्छा करे हैं सब. ज़्यादा. तो आपके कौन से बच्चे यहाँ पर? 10th स्टैंडर्ड में सदिक बात पढ़ लगे, उन्होंने भी जम के हैं उसमें. माशाल्लाह सब बच्चों मेहनत कर रहे हैं, अच्छा है माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. माशाल्लाह यहाँ पे इसमें जो है एग्जीबिशन में जो है सिर्फ बच्चों का नहीं, मतलब मैनेजमेंट का भी बहुत मेहनत लगती है. अरेंजमेंट माशाल्लाह मुकम्मल तौर से की है. यहाँ पे अभी क्राउड, हम लोग कुछ क्राउड भी नहीं देखे वैसा कुछ, मतलब क्राउड स्टक हो गया ऐसा कुछ नहीं, सब वेल मैनेज है. और बच्चों को तो मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रेनिंग किया, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने इतना उनको तौफीक दिया कि वो हर टॉपिक के बारे में बिना हिचकिचाए अच्छे से अच्छा बोल रहे हैं, और इतना हर चीज़ को उठा के मतलब इस्लामिक तौर तरीके से हम लोग को हर दुनिया की चीज़ को जो दिखाया है माशाल्लाह. ये चीज़ की जो इल्म जो है हम लोग सबको, अल्लाह इसका हम लोग को ये अजर दे माशाल्लाह. मेरा नाम सालेहा नियामतुल्लाह है. आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं. मेरे 7th स्टैंडर्ड में मेरी बेटी पढ़ रही है हुनैदा जाफिया, और 7th वही उसी क्लास में मेरी भांजी पढ़ रही है उनैसा रुखैया, और 10th स्टैंडर्ड में मेरी और एक भांजी पढ़ रही है अकीफा ज़ैना, वो स्कूल की कैप्टन भी है. के शहर बेंगलोर का एक अहम इदारा है विजडम इंटरनेशनल स्कूल. जी. सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ. मैं ख़ुद यहाँ पर 12-13 साल से मदरसे में स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ. मैं अल्लाह का शुक्र है. ये इदारा दुनियावी और दीनी दोनों लाइनों से अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं बहुत आगे हैं. कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारे दीनी स्कूल और इस्लामिक स्कूल पीछे नहीं है. हम लोग ए ब्लॉक का भी पूरा नज़ारा करके आए हैं. अल्लाह का शुक्र है, इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों ने अपनी कारकर्दगी का इजहार किया है कि हमारे पास कुछ अल्फाज भी नहीं है कि हम बच्चों के ताल्लुक़ से क्या बोलें, किसकी तारीफ़ करें और किसकी तारीफ़ ना करें. हर बच्चा, हर उस्ताद है ना, हर बच्चे पर इतनी मेहनत किए हैं कि लग रहा था कि हम लोग किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं. अल्लाह का शुक्र है. तालीमी लाइन से भी हो और इसी तरह बच्चों के जो प्रोजेक्ट बच्चे बनाए हैं उस लाइन से भी हो. बहुत अल्लाह ताला ने इन बच्चों को अल्लाह और तरक्यात से नवाजे और इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए. खुसूसन टीचर्स की जो मेहनत हुई, उनके साथ उनके पेरेंट्स की जो मेहनत हुई, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन.
थके नहीं सुबह से नहीं थके सच्ची बोलो अभी 2 घंटे खड़े हो गए भलाई का सवाल करती हूँ और बता के शर से और हर शर से तेरी पनाह चाहती हूँ। खैरुल कलिमा कसरत से पढ़े बाजार में जाने की आदत ये है कि खरीदो फरोख्त में ईमान का झूठ कसम खाना फरेब से बचे। बाजार फितनों की जगह है, इसलिए नजर और दिल की हिफाजत जरूरी है। कीमत में नाज करना अच्छी अखलाक का मुजाहरा रखें। सच्चाई होती है। तूने इसे ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग देख लें। तिजारत और मामलात में धोखा देना सख्त मना है। हदीस पाक में है मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। धोखा गुनाह कबीरा। मैदा और हाजमे के मसाइल पेट में गैस बस हाथ से जलन का खतरा भी हो सकता है। फ्रोजन फ्रूट जूस खाने से कैंसर का खतरा, वजन बढ़ना, जिगर और गुर्दों को बिस्किट्स और चॉकलेट्स खाने से आपसे तो जो हेल्दी फूड के बच्चे ना खाते हैं। हेल्दी फूड खाने से इंसान चुस्त और एक्टिव रहेगा। हेल्दी फूड खाने के डेली है नमाज में according to science the changing of pH to water will solar plants provides vitamin light and social under the plant of सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या चीज़ है बोलो बस डिटेल्स में Smart agriculture was being the core idea is Fire safety uses smoke detectors, fire
Very good, very good. The primary objective of Janmath is a direct follow-up to the partial successor of Chandrayaan, focusing on the reliability and the technological enhancement. The Pragyan rover. Yes. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हिमाचल हैदराबाद के ये लोग हिमाचल प्रदेश I am a farmer. वालेकुम अस्सलाम अब बोलो बेटा My name is Muhammad Adnan Beg. Stand up and say your ज़बरदस्त हुकूमत के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें अता फरमाई थी और परिंदों वगैरह की ज़बानें आप बाखूबी समझ लेते थे। क्या करेगा मैं मैसेज कर वो मैं ग्रुप में डाल दिया ग्रुप में डाल दिया हाँ
Assalamu alaikum. My name is Ikhra Fatima. Hi, I am an astronaut. I explore space, chase stars, and live the cosmic dream. Children.